Hello everyone, welcome back to Vyapaarjagat TV and thank you so much for joining for this particular wonderful interview and आज हम लोग एक स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप स्टार्टअप हो या आप कोई भी बिजनेस जो है वो चलाते हो तो उसमें एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ कंप्लायंस। कंप्लायंस जो है वो हर एक एंटरप्रेन्योर को एक एक सेफ एनवायरनमेंट एक सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड जब हम कंप्लायंस की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स कि जहाँ पे हमें गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो आइडिया है, जो भी इनोवेशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस और काफ़ी सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो रहती है। तो हमारे साथ आज के जो हमारे स्पीकर है ही इज़ मिस्टर बलबीर बोरा। एंड मिस्टर बलबीर हैज़ वर्क ओवर 25 years फॉर द ग्लोबल एक्सपो। आई मीन उनके पास ये 25 years का ग्लोबल एक्सपोजर है एंड ही इज़ वर्किंग विथ आईटी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट compliances. He has spent more than 16 years working in the field of regulatory and product compliances. Balbir has been associated with IT projects in a medium to large enterprises that includes IT procurement, vendor management, and so many other projects. Along with this, Balbir has led and consulted internal technical teams and some of the largest outsourcing customers in India on the regulatory compliance apart from liaison various sections of Department of Telecom and other government offices for the business. So let's welcome Mr. Balbir Bora. Sir, welcome to Vyapaar Jagat TV. Thank you, Dr. Praveen. Thank you for this warm welcome and introduction. It is my pleasure to be here with you and to be associated in the previous discussions. And I would like to see, how I can be of help to this platform and your viewers in terms of, giving more information on what we do on the regulatory compliance. At the same time, how do we really contribute to the environment and be as much green as possible? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। सो सर काफ़ी सारी हम लोग बात करने वाले हैं एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट मी जस्ट टेल टू आवर ऑडियंस दैट मिस्टर बलवीर हैज़ रिसेंटली won the Vyapaar Jagat's one of the most prestigious award, that is Greenpreneur Convention and Award. So sir, first of all many congratulations for the same and now let us start with your background. So sir थोड़ा सा बताइए आपके बारे में, what was your qualifications and how it was all started, कैसे आपने start किया? Thank you, Dr. Praveen, and thanks to the Vyapaar Jagat for the award for the Greenpreneur. And I started my career, after graduating, actually from MS University of Baroda. Wow. So I've been, in Gujarat for a long time. So in fact, even today we have office in Baroda, and Mr. Piyush, Piyush said he had come to receive the award because I'm in Uttarakhand right now. As you can see my background, which is though a picture, but this looks like this only where we Wow. work from. So I've been, part of some of the major IT and networking companies, working on different project management and IT program management kind of roles. And 10 years ago, we started Vincular, which was with the view of how we can support the compliance for the larger global and Indian fraternity. And because there's not much of manufacturing of electronic and telecom that happens in India, so this was something new. And we got the advantage of that being new and niche in this area, whether it is regulatory compliance or other product compliance. Uh, as I'm sitting in right now, Uttarakhand, we have a large office here.
and I personally belong to this place. I was born here, and this is a place, which is really significant of nature and ecology. Uh, Plus what we call the organic environment, organic farming, and everything. So this is really that you can see around the hilly areas here, where nothing is like commercialized, whether farming or anything else. So people are still in the same old style of living. So as far as the commercializing angle of anything is concerned, that's when we break the rule, and we go against the environment. And compliance is something, if we start with, in our nature, right from the air, water, and soil, we need to understand, what is the way to deal with them and what is the way to treat them. And that is the first lesson of compliance that we learn in life. And our also the compliance's larger aims are to make more efficient, more kind of products which are causing lesser harm to the environment. And every year these are getting more and more stringent, and definitely over the time to our country this would be a beneficial thing. Superb, superb. So, sir, आपने so let me tell to the viewers कि जहाँ पे बलबीर he is a founder and CEO of Vincular Testing Labs India Private Limited, and he is also working on other organizations. वो अपने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा जानेंगे सर से. सर, ये बताइए कि आप बेसिकली जब सर्टिफिकेशन की बात करते हैं और हम कंप्लायंस की बात करते हैं, तो क्या क्या सर्विसेज होती है जहाँ पे आप कंपनीज को हेल्प करते हो? सो व्हाट आर दी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज? So one of the very basic thing that anybody can understand and relate to is energy efficiency. सो आप आज की डेट में देखते हैं, चाहे एयर कंडीशनर है या वाटर गीजर है या रेफ्रिजरेटर है, उसमें एक स्टार रेटिंग होता है. तो जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग है वो उतना एनर्जी एफिशिएंट है. सो एनर्जी एफिशिएंट अगर आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो वही आउटपुट आपको कम बिजली खर्च के मिल रहा है. और अगर आप कम बिजली खर्च के वही जीवन जी रहे हैं तो आप कम वातावरण का नुकसान कर रहे हैं. So how to make more efficient products and to comply to those norms जो कि हर साल और stringent होते जाते हैं. तो BEE जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है हमारे गवर्नमेंट में. और ये एक सिंपल रेगुलेशन जिसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ जिसको हर कोई रिलेट कर सकता है. तो धीरे धीरे ये ऐसे बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट से लेके टीवी में भी है, अभी धीरे धीरे कंप्यूटर और छोटी छोटी चीज़ों में आ रहा है. और तो अल्टीमेटली हमें और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा वातावरण का नुकसान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसी में आप उतना ही उतने ही पावर में आप अपना काम चला पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर पाएंगे, जो हमारे मोस्टली होम अप्लायंसेज हैं. हालांकि इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज में भी इस तरह के नॉर्म्स आ रहे हैं. So this was like one area, one simple example. दूसरा रहता है क्वालिटी, सेफ्टी. एक बैटरी है या इवन एक हेलमेट है, अगर आप एक हेलमेट पहन के ड्राइव कर रहे हैं तो कितना सेफ है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है. सो हमारे कंट्री में ये सब चीज़ें धीरे धीरे एज we are going on the path of to become a developed country. तो यहाँ पे the value of life and value of everything is getting increased. तो इसके लिए अभी अभी आपने देखा होगा, कुछ ही दिन पहले मैंने दिल्ली में मुझे पता लगा कि पीछे की सीट में गाड़ी में बैठ के बेल्ट लगाना अभी मैंडेटरी हो गया है. पहले आगे की सीट में था. तो दिस इज अगेन विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी. और गाड़ियों की सेफ्टी के बारे में जो हमारा ARAI पुणे बेस्ड एक जो ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन है, वो उसके बारे में काम करते हैं. भले ही फिर और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो हमें इस तरह के सेफ्टी के जो एरियाज हैं, चाहे वो ISI मार्क है, चाहे वो सेफ्टी का मार्क BIS का बैटरी में है,
तो ये सब जनरली लोगों के अवेयरनेस में भी रहना चाहिए, क्योंकि प्लस these kind of rules make products safe and life safe in our country. बिल्कुल, बिल्कुल। और सर आपने जो भी ये अभी प्रोडक्ट्स बताए, आपकी जो भी सर्विसेज है जहाँ पे आप कंपनीज को हेल्प करते हो, तो मेनली आपका टारगेट एक मार्केट, एक टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या रहता है? So generally, electronics, IT, telecom, these are the areas that we work largely. But क्योंकि आज की डेट में एवरीथिंग इज कन्वर्जिंग, अगर आप देखिए तो अभी फोन में ही टीवी भी है, रेडियो भी है, सब कुछ है. सो म्यूजिक, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, कंप्यूटर एंड इवन टेलीकॉम, एवरीथिंग इज गेटिंग मर्ज. सो अभी जो हमारा जितने भी आज के न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, दे काइंड ऑफ कवर द एंटायर एरिया, राइट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल और इवन होम अप्लायंसेस, जो कि अभी स्मार्ट अप्लायंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो वी try and cover electronics and IT, but somehow we get pulled into almost everything, whether automobiles or even medical equipment, because our customers, who are the global OEMs from all over the world who do manufacturing or make new products. So because the kind of requirements, चाहे वो telecom, wireless, internet, battery, सभी जगह common होता जा रहा है. तो उस चीज की वजह से वी सी दैट वी हेल्प अ लार्ज सेक्टर, largely products in electronics and IT. बिल्कुल। और ये एक मतलब एक अलग टाइप का जो है वो आप इनिशिएटिव आपने जो लिया है जिस पे आप काम कर रहे हो। तो सर मुझे एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू दिस काइंड ऑफ इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट, और ये एक एनवायरनमेंट को हेल्प करे ऐसी चीज़ करने का, आई मीन व्हाट वाज दैट आइडिया? So I think if even I was running a restaurant, I would have kept that in my mind, that it has to be eco-friendly. And you can be eco-friendly in anything that you do. Right from, if you're buying too many clothes, or, you're driving too much of car. So everything has that aspect. So it's not that because I wanted to be eco-friendly and I'm doing it. I think whatever I do or whatever I may be doing, I would have kept that in mind, that, how we can be more compliant with the nature, and be as much as eco-friendly. बिल्कुल। और जिस तरीके से सर आज की डेट पे सब लोग जिस तरीके से नई चीज़ें लोग बाय करते हैं, तो एक एक ऐसा क्लास है कि जहाँ पे उनको लगता है कि मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ, तो वो लोग बार बार जो है वो परचेज करते जाते हैं। एंड दैट्स हाउ आज की डेट पे हमें काफ़ी सारे जो चैलेंजेस है उसको फेस करना पड़ता है, वेर कि जहाँ पे हम रीयूजेबिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बिकॉज ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अलोंग विद दैट जब हम एक इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो सर थोड़ा सा इसके बारे में आपके व्यूज़ जो है वी वांट टू हैव, तो बताइए सर कि आपके व्यूज़ जो है वो फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके क्या है? So I think there is no end to add more things, more substances around you in your life. And it is not always a genuine need, but a lot of times it is out of some impulse that you go through because of the kind of lifestyle, society, whether it is about buying a car or house or clothes. You may not be needing so many houses, but you buy it out of some reason. So these kind of impulsive decisions, or which are driven by the social conditioning that we are growing up. uh, so I don't think this is a sustainable way, and this has to stop, and it will not stop immediately, but over the time, I think the kind of pandemics and the kind of calamities, natural calamities that we see around the world, within our country as well,
I see this is somewhere nature is trying to balance a lot of things which have been not in compliance to the real real shape of the universe or the world. So unless we learn our lesson early, the disaster, it is going to be more disastrous for us only. बिल्कुल. And as much we can be local. हम्म. When I'm saying local, I mean, it can be with respect to food. I mean, आप गुजरात में रह के कश्मीर का एप्पल खा रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो उसके वैल्यू से ज़्यादा है। तो आप गुजरात में रह के खाली आम ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। बट हम तो आज की डेट में चाहें तो कहीं भी दुनिया से कुछ भी मंगा सकते हैं और दैट्स हाउ द लाइफस्टाइल इज बिकॉज इट इज अफोर्डेबल एंड दैट डजंट मीन दैट इज राइट बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। So बिल्कुल. the kind of carbon footprint we are generating is disastrous, and we should be as much local as much possible with respect to anything we do in life. It can be business, it can be whatever. So I think these kind of things, which maybe we are learning slowly over time, uh, that's only is going to get us to a sustainable situation. Otherwise, it's going to be very difficult for us. बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप जो है इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट एंड ए वेरी वाइड एरिया। तो सर मेरा आपको सवाल ये है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी इम्पोर्टेंट बाउंड्री कंडीशंस रिगार्डिंग द सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप? Not really. The boundary is again probably your, if I may call it, greed. That I have to develop to that level. I mean, कोई सा भी बिजनेस है उसका जो स्केलेबिलिटी है आपको वो हल्दीराम का नमकीन अमेरिका में बेचना है। आई डोंट सी एनी सेंस बिहाइंड दैट। मेरे ख्याल से उस वहाँ पे अपना एक बनाने दो जिसको बनाना है। तो दिस इज व्हाट आई मीन बट यू कैन ग्रो एज मच बट इट इज एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। करेक्ट. और बिकॉज आप अफोर्ड कर सकते हो इसलिए आप ग्रो करते जा रहे हो। लेकिन वाई कांट वी हैव 10,000 हल्दीराम्स इन इंडिया? एक ही हल्दीराम को जरूरी है पूरे देश को खिलाने का। So this is how I look at when you're saying, growing sustainably. I mean, why only one family should make all the money out of selling namkeens? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड ये मेरे ख्याल से एक एक बहुत बड़ा थॉट है जो आपने बताया सर। तो अभी इसको इसको ही लेके एक दूसरा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है एंड दैट इज़ कि अगर हम ये सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप की जो बात कर रहे हैं और जब हम ये स्पेशली कंडीशंस और बाउंड्रीज की बात करते हैं तो व्हाट वुड बी सम ऑफ द टिप्स विच यू वांट टू गिव सो दैट द एसएमईज जो है दे बिकम इको फ्रेंडली and they can start adopting the sustainable entrepreneurship. See, I think SMEs is a very big sector in this country, and they're growing every day. And the government has also a lot of focus on the SMEs because they have realized that this is really a very big, probably a little unorganized, but if you organize, this is going to be really big, and the kind of employment that SME sector generates is larger than any other sector, any other organized or a government sector. So this is अगेन एसएमई का जो मॉडल है इट इज अगेन द सेम लाइक मे बी एक छोटे से एरिया में बहुत सारे एसएमईज हैं। सो पूरे कंट्री में लाखों एसएमईज हैं। सो अगेन हो क्या रहा है कि एक ही ब्रांड का कोला पूरा देश पी रहा है तो 1,000 ब्रांड का मतलब इट कैन बी चाहे आटा है चाहे कोला है चाहे कपड़ा है कुछ भी है। आई मीन व्हाई शुड वी गो बाय जस्ट वन मोनोपोली? ये जो मोनोपोली पूरे वर्ल्ड में है चाहे वो फोन के लिए है चाहे खाने की चीज की है पहनने की चीज की है तो एसएमई को तो ब्रेक करना है।
एंड और लेकिन शायद क्योंकि हम छोटे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत, हम तो बहुत छोटे हैं, वो बहुत बड़ा है, अगर मैं कुछ लेके आऊंगा तो इसको कोई लेगा नहीं। लेकिन पूरे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट एसएमई जनरेट कर रहा है, मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक इट इज ओनली a matter of time and thought and belief in what we are saying. It's like, we are the power, and we all have to be having that trust in ourselves, and this entire community which is huge. और आप लोग भी, मैं समझता हूँ, इसके लिए व्यापार जगत के थ्रू से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसकी भी सबको एक अच्छी हेल्प मिलती है और मिलेगी। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आप फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसका आंसर एसएमई है। You have to break down one huge business into thousands of businesses. That's what is SME. और अगर इतने कस्टमर हैं, इतने लोग हैं, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा दुनिया है, ऑटोमेटिकली चाहे विद इन कंट्री और आउटसाइड कंट्री, दे विल बी एबल टू डू अ गुड जॉब। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड आपने बिल्कुल सही बताया। सो सर, हमारा मतलब वही एक 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 अटेम्प्ट है कि जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको ये चीज़ जो है वो समझाना चाहते हैं, ताकि उनको ये जो चीज़ है, मतलब जो इंटरव्यूज़ करते हैं, जो टॉक शोज़ करते हैं, जो कन्वेंशंस करते हैं, उसके माध्यम से कि लोगों को सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चले। एंड थोड़ा थोड़ा, मतलब एक दिन में नहीं होगा, वी ऑल नो, बट पीपल कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एंड पीपल कैन स्टार्ट बिकमिंग द इको माइंडेड entrepreneur. So thank you so much for bringing that particular point in this particular show. All right, so sir, again I'm coming back to your personal journey, जहाँ पे now we want to know about your goal or vision. And so I'll put it in this way, wherein where do you see after 10 years, and आप जो भी अभी काम कर रहे हो, राइट, सो ये पर्टिकुलर बिजनेस को लेके व्हाट इज समथिंग विच यू वांट टू अचीव। सो डॉक्टर प्रवीण, हमने 10 साल पहले बैंगलोर में स्टार्ट किया, बिकॉज मैं बैंगलोर में मेरा लास्ट जॉब था। और धीरे धीरे हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस उत्तराखंड में अप्रोच किए, वहाँ से हमने लोगों को हायर किया। 2018 में हमने यहाँ पे एक ऑफिस ओपन किया। लास्ट ईयर एक और ऑफिस ओपन किया, और जो एग्जिस्टिंग ऑफिस था उसको बड़ा किया, बिकॉज ये कोविड की वजह से कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, वी हैड टू क्लोज सम ऑफ आवर ऑफिसेज इन बिगर सिटीज। और बहुत लोग घर पे आ गए क्योंकि वो लोग यहाँ से थे, तो अभी यहीं से काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट उससे बहुत पहले से ही हमारे को ऐसा हमेशा रहा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। और 18 में जो यहाँ ऑफिस खोला, उसका रीज़न ये था कि आप शहर में जाने के बजाय आप यहाँ पे काम करो, और जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट है उसके फ़ायदा लिया जाए। और अगेन, बाय डूइंग दैट वी आर रिड्यूसिंग द फुटप्रिंट। आज 2 साल से ज़्यादा हो गया है, हमारे करीब 50 से ज़्यादा लोग घर से काम कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो समवेयर रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट that is generated by us as a company. And as a long-term goal, I see that we completely turn the table, like moving. We kind of have prepared our head office here in Uttarakhand, kind of a main office, जहाँ पे एचआर, फिनेंस सभी लोग इधर ही से बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये जो एक this is an example that we are setting for maybe a lot of larger companies, जहाँ पे बड़े से बड़े शहर में बड़े से महंगे ऑफिस खोलने के बजाय हम छोटे शहर में जाके अपने ऑफिस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और सक्सेसफुली अपना बिजनेस चला रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो ओवर दी टाइम मैं ये चाहूँगा कि और छोटे शहरों में और स्टेट्स में ही हम अपने आप को ज़्यादा फैलाएं, बजाय कि बड़े बड़े शहरों में जाके बड़े बड़े महंगे ऑफिसेज और इस तरह के डायरेक्शन में जाने के बजाय हम इस तरह से ज़्यादा ग्रो करें, जो कि अल्टीमेटली एक एसएमई होने के नाते, या एक लोकल बिजनेस होने के नाते, और एक लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के हिसाब से, हम ही को इस आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काम करने से हम ओवरऑल, मैं समझता हूँ, बहुत हद तक हम इस एनवायरनमेंट
को मदद कर रहे हैं बाय नॉट गोइंग फार ऑफ फ्रॉम आवर ओरिजिनल प्लेसेस। चाहे वर्क फ्रॉम होम है, चाहे वर्क फ्रॉम योर सिटी है। और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े कंपनीज ने भी अभी छोटे सिटीज में ऑफिस खोलने का ऐसा शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी वो बहुत लोग वापस नहीं आना चाहते हैं, और या लोग बहुत दूर काम करते हैं। जो पैंडेमिक का एक्सपीरियंस रहा लोगों का, उसके बाद इस तरह के, अब ये तो एक सिचुएशनल ऐसा हो गया है, तो हो सकता है कि ये और ज्यादा इस तरह की चीजें पॉपुलर हों, और जिससे डेफिनेटली सभी के लिए फायदा है। और अगर आप ज्यादा पैसे बचा सकते हैं, तो अल्टीमेटली आप कम खर्चा कर रहे हैं। अगर आप कम खर्चा कर रहे हैं तो कम फालतू खर्चा कर रहे हैं, और कम एनवायरनमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं सर, आपने बताया कि आप आपके पास 50 लोगों का टीम है और सब लोग मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि 50 लोगों का आपके पास जो टीम है, तो ये आपका एक एक कल्चर क्या है? और थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए कि आप कैसे, मतलब सबका रिपोर्टिंग कैसे होता है, कैसे मैनेज होता है सारी चीज़ों? So we believe in very much independent working. I personally delegate almost everything to my senior people. They also believe on the same kind of a culture. We believe in very open, transparent kind of a thinking, जहाँ पे सब लोग सेम बराबर हैं, सब लोग को सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीक्रेट है और कुछ ऐसा है। सो वी बिलीव इन दैट काइंड ऑफ वेयर एवरीबडी फील्स included, feels part of the group, team, family, and so उसी को हम propagate करते हैं, and we have seen very good results. The new leaders that we have are very young professionals, 5 साल 7 साल 8 साल, जो लोग की सीनियर मैनेजमेंट में हमारे यहाँ पे आते हैं। और मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि people have been able to benefit and learn faster. In a smaller organization, I always feel you get more learnings than a very big organization जहाँ पे आप बहुत ही insignificant हो जाते हो। तो उस तरह से यही हमारा सोचना है, और हम सबको एक समान मानते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा केबिन वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, एवरीबडी सिट्स इन ओपन। कोई बॉस का या मैनेजर का या ऐसा कुछ नहीं है। देर आर मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स एंड ओपन, सो दैट्स ऑल। And we also try and eat together in the cafeteria wherever we have offices, which is all managed by the company, again to promote a good you know good culture within the teams. सुपर्ब, सुपर्ब। सो सर, आई एम श्योर आप ये काफ़ी सारी चीज़ें जो करते हो, आपने बताया कि रिमोटली भी लोग काम करते हैं, आपकी ऑफिस में आपका जो ओपन कल्चर है उसको फॉलो करके लोग काम करते हैं। तो कुछ चैलेंजेस भी आते होंगे, मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय कल्चर, बट इन ओवरऑल, लाइक एज फार एज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इज कंसर्न और कस्टमर एक्विजिशन इज कंसर्न, तो क्या चैलेंजेस होते हैं एंड हाउ यू हैंडल दोज चैलेंजेस? मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस हैं वो बहुत फर्क नहीं होते हैं जो आपको घर में आते हैं, है ना, या स्कूल में आते हैं या कॉलेज में आते हैं। तो जब हम घर में और स्कूल में, सो अल्टीमेटली हाउ डू यू, इट्स अबाउट डीलिंग विद पीपल। आप घर पे लोगों से डील करते हैं जब आप छोटे हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, आप बड़े हैं या आप छोटे भाई हैं या बहन हैं, और फिर आप कॉलेज स्कूल, मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है आप घर पे सीखते हैं। और हमारे यहाँ पे जो कल्चर है हमारे कंट्री में, जो कि बहुत अच्छा है, आपके और रिलेशंस भी होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज होते हैं। तो जो यहाँ पे जो लोग हैं, मुझे लगता है उनको तो अच्छे से आता है कैसे लोगों से डील करते हैं, हाँ, रिस्पेक्टफुली डील डील करते हैं, और कैसे कैसे सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो बाहर का इन्फ्लुएंस इतना है कि लोगों को ऐसा लगता है नहीं नहीं हम सही नहीं है, वो सही है। ये जो लोग करते हैं बड़े बड़े विदेशी या जो भी कॉरपोरेट्स,
तो लोगों को एक शायद अननेसेसरी ऐसा सोच रहता है कि प्रोबेबली व्हाट दे आर डूइंग इज राइट, और वही सही है, हम तो पीछे हैं, हम शायद सही नहीं है। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि हम सही हैं। अगर हमारी मंशा सही है और अगर हमारी सोच सही है तो हम सही हैं। मुझे किसी और से देख के कैसे, क्यों जरूरत है कि मैं डिसाइड करूं मैं क्या सही कर रहा हूं कि नहीं। तो वो जो चीज है, मुझे लगता है कि हमारा एक बेसिस है जिसमें कई बार हमारे काम ऐसे दिखते हैं, ऐसे लगते हैं कि जो कि थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं, लेकिन वी डोंट स्टॉप बिकॉज वी थिंक, वी फील दैट इज राइट एंड वी डू इट। बिकॉज किसी ने किया या किसी ने नहीं किया उसको नहीं देखे बिना वी रादर सी कि क्या हमें करना चाहिए, एंड इफ एवरीबडी फील्स इट इज राइट, लेट्स डू इट। चाहे वो कंपनसेशन के बारे में है, चाहे वो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में है, कुछ भी है। सो आई थिंक वी ट्राई एंड ग्रो वेरी मच ऑर्गेनिकली, जैसा एक ह्यूमन और एक वेरी इंडियन कल्चरल उसमें रहता है, रादर देन वी ट्राई एंड कॉपी की या किताब से पढ़ के ऐसा ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, सो सर, नाउ बिफोर वी कंक्लूड दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, मेरे 2 सवाल है आपसे। एक कि हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम आउटसाइड द वर्क? एंड दूसरा ये है कि टेल अस समथिंग व्हिच यू आर लर्निंग राइट नाउ। So I'm learning about the food industry. I'm learning about the cybersecurity. I'm also learning how to do off-roading, you know, with the kind of off-road vehicles. And apart from that, whenever I get time, I read books. I play tennis. I play badminton, and I also like to run. Wow. All right, so sir, thank you so much. But before we wrap up this particular interview, I think the last thing is what message do you want to convey to our viewers and especially the young entrepreneurs, those who are watching this particular interview? So my message is, I think this is the time for this country. This is the time for you. This is the time for this SME community, and that we should do something of our own rather than following the footsteps of सरकारी नौकरी या कुछ भी जो भी इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग करके इधर जा, उसमें आपका कोई इतना, ठीक है बहुत कुछ वहाँ पे है करने को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ करना है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आई थिंक टेकिंग दैट डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन वुड बी इन योर लाइफ। ठीक है, यू मे वर्क समवेयर, टेक सम एक्सपीरियंस विदाउट दैट वुड हेल्प यू, रादर गोइंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस, टेक सम एक्सपीरियंस, बट have this in your mind that you should be doing something of your own in your long run. And I have complete faith in this country, the economy, the government, and the time right now is the time for this country, and it is going to definitely grow many bounds. और अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं किसी भी छोटे बड़े किसी भी तरह के काम में, आपको करना ही चाहिए। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, एकदम सही कर रहे हो। Superb, superb. I think lot of learning out of this particular session, sir. It was really, great talking to you, and it was a wonderful discussion about your journey and especially, the sustainable entrepreneurship की आपने उसके बारे में जो भी बताया. So, Balbir ji, thank you so much for taking out your time from your busy schedule, and thank you so much once again. Yeah.